Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a uniform rod of length small l is suspended by an end and is made to undergo small oscillations. Find the length of the simple pendulum having the time period equal to that of the rod. Fine. So हमारे पास एक uniform rod है, something like this. Let's say mass of the rod is small m and इसका जो length दे रखा है that is small l. एंड हम इस रॉड को एक एंड पे हिंज करते हैं समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज़ यूर पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. एंड इसका जो टाइम पीरियड है, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड. इट विल बी अ रिजिड बॉडी है ना. सो जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डेराइव किया था, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू डी. What is d? D is the perpendicular distance between the point of suspension and the center of mass. So ये जो distance होगा, this will be L upon 2. So d is nothing but L upon 2. I about center of mass for this rod will be ml square by 12. So just put the values. 2 pi under root of ICM will be ml square by 12 plus m into d square, that will be L square by 4, डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू डी, दैट इज़ l बाई 2. सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सो देखो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी 4 अपॉन 12, दैट इज़ 1/3. सो 1 अपॉन 3 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू एल अपॉन 2. सो m से m कैंसिल हो गया, ये l से l कैंसिल हो गया. सो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ l अपॉन 3g और रूट, और यहाँ पे 2 पाई है, राइट. सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड. एंड हमें एक पेंडुलम का लेंथ फाइंड आउट करना है. लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल एल. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, कितना होगा इसका टाइम पीरियड, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. दिस टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड. सो इसे हम इक्वेट कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एल अपॉन 3g. सो यू कैन सी 2 पाई कैंसिल हो गया, g से g भी कैंसिल हो गया. सो कैपिटल L इज 2l बाई 3. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.